गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है विश्वजीत। हेलो एवरीवन, टेक विश्व पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोको M3 जो आज लेके आने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पोको M3 लेके आने वाला है। अभी और 5 मिनट में अपना लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ 5 मिनट्स टू ब्रेक डाउन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो क्विकली लेट्स डाइव इनटू इट। और अगर आपके पास कुछ आप अगर मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइव चैनल में ही पोस्ट कर दीजिए, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो मैं एंटरटेन कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स डाइव इनटू इट। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं पोको M3। जहाँ जो भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आई है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी एट द एंड ऑफ दिस शो। तो पोको M3 जो है, पोको का M सीरीज जो है वो बेसिकली एक इंटरमीडिएट सीरीज़ रहा है हमेशा से, जहाँ पे जो 10,000 से 15,000 का जो रेंज आता है उसको कवर करने का पोको ने यहाँ पे कोशिश की है। पोको ने एक अच्छा खासा मार्केट बनाया है इंडिया में भी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। आप देख पा रहे हो किस तरीके से दिस इज़ अ बोल्ड डिज़ाइन। आप देख पा रहे हो इन्होंने कैमरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग ही चेंज कर दिया है पीछे के साइड से। और मुझे लगता है पोको का ये न्यू डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो मुझे पसंद आया है अगर आप पूछोगे तो, बिकॉज सारे फ़ोन जो है वो आजकल आईफोन या सैमसंग की तरह ही एक साइड में कैमरा का लेंस देने का कोशिश करे, जो एक मोनोटोनस हो जाता है कुछ दिनों बाद अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन टू हैव। एक बोल्ड लुक आता है इसकी वजह से, और दिखने में भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है। आप अगर फ़ोन पे बात करें तो ऐसे टाइम पे किसी भी बंदे का आपके फ़ोन की तरफ जल्दी से ध्यान जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रिपल कैमरा लेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्लैश आप देख पा रहे हो, पोको का बैजिंग यहाँ पे राइट साइड में नीचे के साइड में देख पा रहे हो। और यहाँ पे ऊपर आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। ये क्विकली लाइव स्ट्रीम चालू होगा उससे पहले हम कवर कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। जी हाँ, पोको ने मुझे लगता है 6 GB रैम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है। 6 GB रैम स्टोरेज के साथ में आने वाला है ये। 2020 पूरा 4 GB रैम पे ही चला गया, तो मुझे लगता है 6 GB इज़ द न्यू नॉर्मल इन 2021। तो 6 GB रैम के साथ यहाँ पे पोको M3 स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले ग्रेट रैम, राइट, 6 GB। हाँ, तो अगर आप मुझे पूछोगे हाई इंटेंसिव गेम खेलने के लिए और डेवलपर्स अगर कुछ नया लाने का कोशिश करते हो तो उनके लिए 6 GB का रैम इज़ अ वंडरफुल रैम। UFS स्टोरेज इन्होंने 2.2 या 2.1 एंड 2 स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो UFS स्टोरेज जो है वो भी थोड़ा सा हाई स्पीड कर दिया है, जिसकी वजह से रीड एंड राइट स्पीड फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा ओवर द टाइम आप जितना यूज़ करोगे। हालांकि ये देखा जाए तो ये UFS 3.0 से भी कम ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से 2.2 विल बी अ ग्रेट डील टू हैव। सुपर फास्ट स्टोरेज की यहाँ पे बात की है तो मुझे लगता है 64 GB या 128 GB ऐसे दो स्टोरेज ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, यू बेटर बिलीव इट, ऐसे भी यहाँ पे ये कमेंट कर रहे। तो देखते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 662 रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है प्राइमरी, बट देखते हैं क्या कौन सा प्रोसेसर आता है। 5G प्रोसेसर है कि नहीं गाइस, ये ज़रूर देखना होगा यहाँ पे, बिकॉज अगर ये प्रोसेसर 5G नहीं होगा देन दिस फोन विल नॉट बी अ वर्थ परचेसिंग, बिकॉज 2021 में सारे फ़ोन जो है वो 5G पे शिफ्ट होना चालू हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिखाई गई है। फ़ोन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैमरा का नॉच ऊपर का देख पा रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो 6000 mAh का बैटरी भी है, 6 GB रैम से 6000 mAh का बैटरी, ऐसी छोटी छोटी ब्लंट चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा की भी बात की है तो सोनी का सेंसर होना चाहिए ये। सो दैट्स ऑल, इतना ही यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे लगता है 12 बज गए ऑलमोस्ट। सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द लाइव स्ट्रीम इटसेल्फ नाउ।
ठीक है, सो प्लीज़ एंजॉय कीजिए लाइव स्ट्रीम। आपको कोई कमेंट सेक्शन कुछ पूछना है तो यू कैन पिंग मी ऑन कमेंट, आई विल बी answering your questions right away, okay? Can it handle video editing apps? Audio, video, and image editing apps all at the same time. Looks good to be in our video. It's fast. Looks killer. അടിപൊളി മോനെ. Big moves. It's man. This is definitely a vibe. Jackass. Sakatagida maga. And there you have it, the new Poco. Now, can I kill someone? Hi there, welcome to this very special Poco launch. Considering we've not met in months, I want to wish you a very happy 2021. I hope you have a successful year and hope you wish the same for Poco team as well. I am Anuj Sharma and I look after Poco in India. I also have, after a very long time, the entire Poco team with me here for this launch. So guys, say hi. Well, you know our portfolio, it's been super lean. Now of course you've got the Poco F series, that's where it all began. And then last year we introduced the Poco X series, giving you that flagship experience but in a more pocket friendly price. Of course we had the mid-range powerhouses, the M2 Pro and M2, and early October we introduced for the first time a C series product from Poco, the Poco C3, a very smart starter phone for almost everyone out there. Essentially, October was the first time where the entire Poco squad of phones assembled, and the results were phenomenal. In Big Billion Day sales in October, in less than a week, Poco sold more than 1 million phones. Now, all of them have come together to propel Poco to become the number 3 brand online in this entire country. And we are extremely thankful again to all the Poco fam who've been supporting us, who've been giving us a lot of feedback and helping us get there. Now this goes to show that the Poco core philosophy of everything you need, nothing you don't, implies even for a portfolio. Poco had one of the smallest portfolios amongst all brands in the country, yet we were able to hit the number 3 position. That goes to show having good phones is more important than having more phones, and Poco will continue to focus on giving you the best quality you can get in the country amongst any phone brand, and that's going to be a focus going forward as well. Here's a quick recap of Poco in 2020. Check it out. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Introducing the all-new Poco M3. Killer looks, OP performer. Well, this one is a phenomenal product. But let me talk about the first aspect of it, killer looks. Now when we say killer looks on the Poco M3, we really mean it. The M3 probably is the best looking device that you've ever seen in this segment. The back panel has this amazing leather-like finish. Now that helps not just with the looks, but the ergonomics as well. You've got a better grip and it does not take fingerprints. But when I'm talking about the overall looks, you can also see the camera module. Now this camera module has two purposes. It looks good, of course, but the second one is it's just 1 millimeter thick. That means it is reducing your wobbles
when you're keeping this phone on the table, and all of that coming together in 3 amazing colors. Now you've got this really cool blue. You've got, for the people who want a little more understated design, you've got this power black, and introducing for the very first time the all-new Poco yellow. Now this yellow looks unlike anything out there, and these are our brand colors. Of course, I am absolutely sure that all the Poco fam out there is going to love this particular phone. Not to forget, you also have a really fast side-mounted fingerprint, so your back always looks right and clean, and it weighs less than 197 grams. It's sexy and you know it. Now multimedia is more important than ever before. What you see and what you hear on your phone has to be top-notch. Last year, when we were launching the Poco M2, this is what we said. Today, Indians all across the country are connected to the internet and viewing hours and hours of content. But still, they do not have access to high-quality displays to view this content. It's 2021 and this is still happening. Kya hai? Now I can understand why some of these brands choose to use a HD Plus display, essentially to save some money. However, at Poco, we think this is a compromise that we cannot make. And that's why on the Poco M3, you are getting a full high definition plus display. I'll give you 2 examples on why you need to have a full high definition plus display. The first one is when you are watching movies or maybe even looking at pictures. You are holding your phone about 1 foot away from your eyes. You can start seeing those edges in an HD Plus display. This is where a pixel density starts really mattering. And the second point is when you're reading text. Now when I'm saying text, it just does not have to be documents, can be even web pages or even probably news. This is where you start seeing those jagged edges on the text. And a full high definition display starts making a difference here. Now how much of a difference is there when I'm talking about pixel density? 20%, 30%? It's actually 2.2 times more pixels in the same space when you're choosing a full high definition display of a Poco M3 versus a competitor's HD Plus display. Now not just a better display, but a more immersive one as well. On the Poco M3, you're getting a large 6.53-inch display. Now this is amazing when you're watching movies and you get that edge-to-edge play. And when I'm talking about edge-to-edge play, you also have a screen-to-body ratio of more than 90%. The Poco M3 comes with Corning Gorilla Glass protection. And because we all want a little more, thoda zyada, we've got a pre-applied screen protector on every M3 coming out of the factory so that you are even more protected. Now to complete this entire multimedia story, you get a stereo speaker setup. Now that means you can enjoy all your content in stereo right from the phone. But that does not mean we've forgotten about the 3.5mm headphone jack. It's still there. And so is the fan favorite IR Blaster that lets you control thousands and thousands of devices straight from your phone without ever having to walk those extra 2 feet to pick up a remote. What you see on the full high definition display and what you hear on the stereo speakers is perfect for your everyday multimedia. The next part I want to talk about is the OP performer part, or performance. However, we're going to do it a little differently and explain a bit more. Normally, everyone would just put AnTuTu scores and say that my CPU is better, but a CPU is not the complete story. We want to talk about the 3 key things that you need in every device for it to perform well. Yes, the CPU or the SoC is important, but so is the RAM. Otherwise, how does the CPU get its information? Equally important is the storage. How quickly can you read your apps or your data off the storage, move it to your RAM, and have it processed by the CPU. And that's where the trilogy of performance becomes super important. Now the first part is the RAM. The RAM is one of the key components when it comes to performance. And like the M2, on the M3 we are not compromising on the RAM either. We've got a 6 GB of LPDDR4X RAM. And let me differentiate that from obviously a lot of competitors having 4 GB RAM
and some folks having LPDDR4 RAM. Now 4 and 4X are different, but what you get with this is better multitasking, being able to switch between apps, and of course overall better performance. When you're talking about LPDDR4X RAM, you get two key advantages over a DDR3 or DDR4, and that's essentially more performance and lower battery consumption. Now to demonstrate what the 6 GB of LPDDR4X RAM can do on the M3 versus other devices using 4 GB of RAM, let's take a look at this quick video. Now you just saw the advantage of having 6 GB of LPDDR4X RAM. And when you've got so many apps in your system, you also need to take care of the kind of storage it has. And that brings me to the second part of the Trinity, which is how good is your storage on the phone. Well, on the Poco M3, we are using either 64 or 128 GB of storage. But the good part is not the size of the storage, but the type of storage. On the Poco M3, you are getting UFS 2.2. Now this, when compared to eMMC 5.1, which is there in probably almost all devices in this segment, gives you read and write speeds of 3 times the magnitude. When you've got a lot of apps, when you're loading that large game, or when you're transferring movies, this starts making a difference along with the high-speed RAM that you've got. Now to complete this performance trinity, we've got RAM, high-speed storage, and processor. We've got the Qualcomm Snapdragon 662. Now the 662 is an 11 nanometer processor. That means along with performance, you're also getting better battery efficiency. Even from a gaming perspective, the Adreno 610 is up to almost every task. And you've got a new ISP, the Spectra 340 for photography. All these three things combined together is giving you the OP performer Poco M3. With the M3, we're taking it one step forward. We're including a massive 6000 mAh battery. Now most of the phones with 6000 mAh are heavy, but not the M3. For me personally, I get more than 2 days easy. But from a stats perspective, you get 185 hours plus of music playback, more than 18 hours of streaming video. Now that is something that you really want to look forward to. In the M3, you're getting support for an 18-watt fast charger, and that fast charger is in the box. So you go from 0 to 100 real quick, but 100 to 0 takes a long time. We are bringing back Better Battery 2.0 on the Poco M3. Now what does that mean? An average battery has about 800 charge-discharge cycles at room temperature, which is about 25 degrees centigrade. But if the temperature rises, let's say 45 degrees, this takes a massive hit on your battery's charge-discharge cycles. Well, with Better Battery 2.0, we managed to extend it. In room temperature, you can get almost 1000 charge cycles. Even in that extreme heat, you're getting 600 charge cycles. What this means is your phone lasts longer because your battery does not deteriorate till these cycles are done. And all of this hardware is further optimized with various software features which takes care of your battery as well as the drain on a day-to-day basis. Now coming to the cameras, we know that all of you guys love photography. That's why we're taking the 13 megapixel camera on the Poco M2 and changing it to a massive 48 megapixel camera on the M3. You're going to absolutely love the cameras on the M3. The main sensor is now a half-inch sensor that lets in a lot more light and lets you do some amazing things. But what we've not forgotten about is the versatility. You still have a depth sensor for your portraiture and the macro lens that lets you get really close to all the subjects. To get an idea of what the cameras on the Poco M3 are capable of, let's take a look at this quick video.
Now that you've seen what the camera is like on the Poco M3, you also saw the multimedia prowess, the way it looks, or the overall performance. I want to go one step further and talk about the overall experience. And that comes in with the software that binds it all together. It comes with MIUI 12 out of the box, but with the familiar Poco launcher that all of you guys have come to love. You have a very clean, minimal UI, but along with that, a whole bunch of personalization options. You've got dark mode, you can change icons, you can change fonts, but I know the favorite part that all of you guys love is this is not monetized. That means this is probably the only device in its class that does not have ad-supported UI. Now the Poco M3 experience goes even further when it comes to connectivity. The first one is dual VoLTE. That means both your SIMs can latch on to the independent VoLTE networks. The second one is dual VO Wi-Fi or voice over Wi-Fi. That means when you're at home and say your LTE network isn't very strong, you can use Wi-Fi networks to also make phone calls. And the third one being the dual band Wi-Fi. That means the Poco M3 is able to connect to both 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi networks. And obviously we all know with 5 GHz you can get better download and upload speeds. So that is the Poco M3 for you. Killer design, OP performer. But before I get to the price, kitne ka milega? Let me take a look at what else is there amongst the competition. From a RAM perspective, all of these are at 4 GB, while at Poco, we are at 6 GB. M3 is the only device in its class to have a full high definition display. And while all the others have a mono speaker, the Poco M3 features a stereo immersive setup. As you saw, the Poco M3 excels at almost every parameter. Now coming down to how much will it cost, the pricing. Now the Poco M3 comes in 3 colors and 2 variants. 6 GB and 64 GB, and 6 GB and 128 GB. I'm happy to announce that the 6 GB 64 GB variant will be available at Rs 10,999 only. And the 6 GB 128 GB, this is the one with the UFS 2.2 storage, will be available at Rs 11,999 only. Now, along with this, we've got some really exciting launch offers for all of you guys. So watch out for the first sale on Flipkart on the 9th of February at 12 noon. I would like to thank our streaming partners and of course all of you for joining us today. So this is the Poco M3, killer looks, OP performer. I'm absolutely sure all of you guys are going to love this. Thank you, take care, stay safe.
तो गाइस कैसा लगा आपको ये ओवरऑल वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइए। प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं जाने से पहले। मैंने सोचा था कि 9,999 रुपये में आएगा इसका 6 GB 64 GB वेरिएंट, और 10,999 में आएगा इसका 6 GB 128 GB वेरिएंट। ये प्राइजेस इफेक्टिव है फॉर द फर्स्ट सेल, क्योंकि पोको ने यहाँ पे और 1000 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया। मुझे लगता है बायर्स को स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ों से ऐसे कैश डिस्काउंट्स वगैरह देने के चक्कर में ये प्राइस जो है वो अप की जाती है और बाद में आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट नॉनदलेस ओवरऑल मैं खुश हूँ ये डिवाइस से, बिकॉज 10,000 इज़ अ रियली नाइस बजट अगर आप मुझे पूछोगे तो। बिकॉज आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा महंगा फ़ोन लेना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो ले नहीं सकते, पर वो पसंद नहीं करते, बिकॉज 5,000-7,000 रुपीज़ इज़ अ वेरी लो बजट जहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है, और 15-20 हज़ार का बजट ऐसा है जहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। तो मुझे लगता है एक गोल्डन मिडल की तरह ज़्यादा करके लोग 10,000-12,000 का रेंज पसंद करते हैं, ये रेंज में रहना। और ये जो रेंज है ये मोटरोला ने मोटो का जी डिवाइस आया था पहला, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ से पूरी दुनिया को पता चल गया था कि हाउ इंडिया लाइक्स द फोन्स इन विच प्राइस ब्रैकेट इज़ द स्वीट स्पॉट टू हैव। तो मुझे लगता है पोको ने यहाँ पे एक बेस्ट फ़ोन डाला है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी, ट्रिपल कैमरा सेंसर, क्वालिटी फिट एंड फिनिश भी अच्छा लग रहा है। पोको के लॉन्चर के साथ में आता है ये। छोटी छोटी सटल चीज़ें जैसे मेमोरी कार्ड का एक्सपेंशन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद 18 वोट का क्विक चार्ज भी प्रोवाइड किया है इन्होंने, वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। कैमरा सेंट्रिक कैमरा भी अच्छा लगा। मुझे उनका वो ट्रायंगल बहुत पसंद आया जहाँ पे उन्होंने तीनों चीज़ों का बात किया, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, रैम और एक चीज़ थी भूल गया मैं। तो ऐसे ट्रिपल इसका मतलब एक पूरा हार्डवेयर इंटीग्रेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो मुझे लगता है वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर का बात करना भूल गए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर का पैरामीटर उन्होंने अलग से रखा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वंडरफुल डील। एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं। 6 GB 64 GB का 9,999 में मिलेगा, 6 GB 128 GB का 10,999 में मिलेगा फॉर फर्स्ट सेल। उसके बाद प्राइसेस विल इंक्रीज फॉर 1000 रुपीज़, और ये जो है वो भी ICICI बैंक के कार्ड के साथ में है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो वो एक अच्छी, वो वहाँ पे आपको देखना होगा। ड्यूअल वोल्टेज का सपोर्ट मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं है, ये 5G फ़ोन है या नहीं है, ये इसका बात कहीं पे नहीं हुआ है। तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे नहीं लगता है कि ये फ़ोन 5G है, दिस विल बी 4G ओनली फ़ोन, बिकॉज यहाँ पे कोई 5G का बात नहीं हुआ। जो भी कंपनी मार्केट में कुछ लॉन्च करती है वो 5G को छोड़ेगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी। और वैसे भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 जो है वो 11 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे लगता है 5G उसमें नहीं आता है। दिस इज़ नॉट अ 5G प्रोसेसर। तो ये इसका मैं डिटेल आपको एक बार वेरीफाई करके मैं पोस्ट कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम गाइस, आई गेस इट्स ऑलरेडी 12:20 हो चुके हैं, तो वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ओवरऑल सेशन कैसे लगा। इसी के साथ जाने से पहले मेरे टेक-विश्वा यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारे लाइव वीडियोस, लाइव इवेंट्स कवर करने का कोशिश करता हूँ। सारे जो भी नए लॉन्चेस है वो मैं लाने का कोशिश करता हूँ। तो आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो। तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।